Reena Gupta, Senior Consultant, Fertility and IVF Specialist at Cloud9 विकासपुरी branch. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि if you are working, how can you manage your IVF treatment cycles? There are very working couples who find it difficult कि अब हम जॉब भी करें और फिर IVF is such a long process. How to manage the appointments and how to take leave and all that. See, IVF is a very simple process and it doesn't need very time-consuming appointments. So, जो IVF treatment होता है, it is generally divided nowadays into two parts. Where in first part you have to take injections and we take out the eggs and create the embryos, and in the second part we transfer the embryos back in the womb. So, first part जो है, it is for 2 weeks. And if you are working, you are not supposed to visit the clinic every day, and there are no, it's not like that. Your half of the day will be gone in the consultation and blood test, or it's not like that. So when your IVF treatment starts from the second day of your periods, you have to take injections for 9 to 11 days, depending on कि आपकी body कैसे respond कर रही है. तो आपको सिर्फ इंजेक्शंस लेने हैं. मोस्टली नाउअडेज इंजेक्शंस कैन आल्सो बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड. सो द सिस्टर विल ट्रेन यू कि आपने इंजेक्शन कैसे लेना है. यू कैन टेक देम एट होम आल्सो. सो सेकंड डे आपको एक विजिट रहेगा विद योर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जहां आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा. दैट विजिट मे टेक सम टाइम, एंड इफ यू कैन visit in the early morning between 9 to 10. So in 1 hour you will be done with your consultation, with your scan and your first injection. After that, those 9 to 10 injections, 9 to 10 days of injections आप self administer कर सकते हो घर पे. You just have to be specific कि आप किस टाइम इंजेक्शन ले रहे हो. So according to your convenience आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइम आपने इंजेक्शन लेना है according to your job profile. उसके अलावा बीच में एवरी 3rd 4th डे आपको अल्ट्रासाउंड के लिए विजिट करना पड़ेगा. तो दैट ऑल्सो यू कैन मैनेज अकॉर्डिंग टू योर वर्क टाइमिंग्स. तो इट इज नॉट लाइक कि आपका पूरा दिन चला जाना है उसमें. यू जस्ट हैव टू विजिट द क्लिनिक, यू टेक अ प्रायर अपॉइंटमेंट, यू गो एंड गेट अ स्कैन डन एंड देन कम बैक. इट इज जस्ट अ 30 minutes job. So that is also you can manage with ongoing job. The only day where you have to take a leave is the day when we need to admit you for half a day and take out your eggs. So उस डे के लिए आपको लीव लेना है. तो that day you can apply leave, and your fertility specialist will tell you a tentative date before starting the treatment that on these days you may have to take leave. Otherwise you can apply for a sick leave for 1 day. After egg retrieval also you can from next day you can go back to your work. उसमें इतना कोई ना पेन होता है ना कोई एनेस्थीसिया का पोस्ट इफेक्ट है कि आप नहीं जा सकते हो. यू विल बी वेरी नॉर्मल टू डू ऑल योर रूटीन एक्टिविटीज. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट है, उसमें अगेन आपको सेकंड डे एक बार स्कैन के लिए आना है. आफ्टर दैट यू डोंट हैव टू विजिट आल्सो. यू जस्ट हैव टू टेक द टैबलेट्स एंड मेडिसिन्स एट होम, एंड यू हैव टू टेक द टैबलेट्स ऑन टाइम. उसमें इंजेक्शंस भी नहीं है, आपको सिर्फ टैबलेट्स लेनी है. उसके बाद एक बार ही अपना यूट्रस लाइनिंग चेक करने के लिए आना होता है बिटवीन 12 to 14th डे. वो भी एक सिंपल स्कैन है, हाफ एन आवर में आप स्कैन कराएंगे. यू विल गो बैक टू योर वर्क. आफ्टर दैट व्हेंस योर एम्ब्रियो ट्रांसफर डे इज प्लान्ड, दैट डे अगेन यू विल हैव टू अप्लाई फॉर अ लीव, एंड दैट इज a half day procedure. Generally it takes half day in the clinic, though the procedure itself is of 10 minutes, but it will take half day. After embryo transfer, I generally recommend to take rest for 48 hours. तो वो आप प्लान कर सकते हैं कि आप 48 hours के लिए लीव ले लें और you apply for work from home. That can also be done. From home you can do your work. After 48 hours you can go to work. ऐसा नहीं है कि you have to be on bed rest and you cannot go out of the house. You cannot do your routine activities. You can continue everything. It's just that you have to take the medicines on time. So for working couples also, it is not that difficult कि आप IVF के साथ साथ अपना जो है जॉब भी कर सकते हो और आपको इतनी लीव्स भी नहीं लेनी है. ऐसा नहीं है कि आप IVF करा रहे हो तो अब आप बिल्कुल बेड रेस्ट पे चले जाओगे, आप और कोई काम ही नहीं कर सकते. These are all myths. You can continue your normal routine activities and your work also. The other important aspect in IVF is that when you are working, you think that there is a pressure of
work also at workplace, and then this fertility issue is also giving you so much of stress. So as a fertility specialist, I would recommend ki you see the stress is not going to help you in any ways, and there will be no patient जिसको stress नहीं होगा whether the patient is taking fertility treatment or not. But you have to take the treatment, only then you will get the results if you need treatment. So stress is just a part of life. हम कोई भी एग्जाम में बैठते हैं तो स्ट्रेस तो होता ही है. So वो स्ट्रेस तो रहेगा ही. We have to deal with the stress. ज़्यादा अगर हम उसी के बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेस होगा. If you keep on working, then obviously your mind will get diverted और आपका स्ट्रेस भी कम रहेगा. So it is better to keep working while you are taking fertility treatment and take leaves only on the specified days, and generally only 3-4 days of leave is required in the whole IVF treatment process. Thank you.